So is the attendance full today? Any more students writing exam? All right. So I'm told that instead of extra lecture, I'll repeat the topic which has been done. Who requested for extra lecture? I think you. So anybody else missed? Did you miss one lecture request? Okay, tell me which topic you missed. Sir, introduction में कहाँ तक किया था बताओ? इंट्रोडक्शन तो होता ही है उससे. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था तुमने? हाँ देखिए उसमें. Last lecture you attended while traveling, right? So you were able to receive it continuously, no crack. Generally during travel it breaks in between. You experience the breaks in between somewhere. This little voice cracks. Little. Good. The pressure in fluids se pehle wala. Pressure in fluids se pehle wala you had missed. Okay. Okay. मतलब इंट्रोडक्शन तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है. काम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी मिस किया है तुमने? हाँ वो मिस किया. हाँ ठीक है. फ्री फॉल मास वेट वो सब कुछ मिस किया है. ऑल राइट. Okay, so let's start. Everybody settle down fast. Gravitation. So I'm repeating it because I think half the class is missed it. Okay. So the topic which they have missed is, first of all, what is gravitation? What is gravitation? This term is very loosely used. Okay. So what is gravitation? Your understanding? Every object has a force which attracts. Every object gets attracted by Earth downward, right? So that force is gravitation. So basically it is a force. Okay? So gravitation is the force of attraction. So we are familiar about all the objects that are pulled by Earth towards itself. Anything you drop, it is going to go towards Earth. Okay, so that's gravitation between the object and Earth. But it is also applicable between any two objects. Okay, that is what is universal law of gravitation. Not only between Earth and duster or pen and duster, between these two objects also there exists force of attraction. That is called as universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. What is this law?
This law says that if there are any two objects, right, let's represent the objects by two spheres. Let's say this object has mass m1 and this has mass m2. Okay, or if it is a bigger object, call it its mass as m and this mass as small m. Anything, right? Imagine this object is bigger. Understood? So either of the mass, either m1 or capital M. Okay. So let's say its mass is capital M, and or you can take its mass as m1 or m1. Okay. And what is the distance between their center? Let us say the distance between their centers is d. This distance from here to here. Right? Then according to Newton's universal law of gravitation, the force of attraction between these two bodies is directly proportional to the products of the masses. Textbook, it is given capital M, small m. Yeah, and it is inversely proportional to the square of distance between them. This is the formula. So this is the mass of the big object. Yes, and you can write m1, m2 also, or you can write f is proportional to m1, m2, and inversely proportional to 1 by d square. That is also possible. Yes, this is the formula. Okay. So now when you combine this, so which one you like? You like m, capital M, small m, or m1, m2? Huh? So capital M small m plus full time. It doesn't matter. Okay. So which one? Capital M, small m. In book also, textbook also, it is given capital M, small m. So let's follow textbook one. So when you combine these two, what you will get? Combining above, you get F is capital M into small m divided by these. This is what you get. Okay? Just to combine these two relations. Now, mathematically, you know that whenever you remove any proportionality, you have to replace it with constant. In physics, the value of the constant is determined experimentally. So, this G is called universal gravitational constant. Its value is, and come in fast. And its value is 6.67 into 10 raised to minus 11. Okay. Then what is the unit of G? The unit of G will be F multiplied by D, which is length square, divided by kg square, masses. So what is unit of G? Newton meter square per kg square. Understood? Yes. So how we got the unit of G? I hope you got it. Okay. How do you get? Derive the unit of G. G will be equal to what? F into D square divided by M. So what is the unit of force Newton? Unit of D is meter square divided by kg into kg. Got it? This is how we'll get the unit of G. Right. So this is it. So this is the universal law of gravitation. So you might ask, then why these two objects are not pulling each other? There exists force of attraction between these two objects, right? As per this law. Why are they not pulling it? Look at the objects. They should actually pull each other, right? But they are not pulling it.
Earth mass. Earth's mass is much bigger. Okay. So to understand the magnitude of force of gravitation between these two objects, imagine these two objects are 1 kg each. Imagine, let's say, for simplicity of calculation, these two can also be verified. Let's say they are both 1 kg each, and they are separated by 1 meter distance. Okay, they are separated by 1 meter. Let us calculate the magnitude of force. So how much will be the force? So F is equal to G value is 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass is 1 kg into 1 kg divided by distance of separation is also 1 between them. So what is the magnitude of force we are getting? This force is not even 1 Newton. So it is very small force. How much it is? 6.67 divided by how much? 10 raised to 11. What is 10 raised to 11? 100 billion. Okay. This is equal to 6.67 divided by 100 into 10 raised to 9. 10 raised to 9 is a billion. So if you make 100 billion parts of 6.67, that is a small force it will give. Almost zero. Okay? So this much Newton it is. So this is a very small force. Very, very, very small. Okay, this is very, very, very small force. So it is negligible. So it won't show any effect. Right? If the masses of the object is small, this force will not show any effect. Okay? So, but if the mass increases, like let us say now we have Earth. Let's say now this is Earth. And let's say there is some object kept on top of Earth, like this. Okay. Let's say its mass is small m, and this mass is now me. Then what will be force? Let's calculate it here. This time F is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into mass of Earth into m. Let's take this mass is till this pen 1 kg. Okay, and divide by what is the distance between this object and center of Earth? Would be radius of Earth. Okay, RE. Right? So let's write down RE square. How much do you get? 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of Earth is 6.0, almost 6 into 10 raised to 24. 10 raised to 24 or 22? Earth is 22 or Moon is 22? 24. Moon is 22, right? Let me check. Earth is 24 also. Okay, now radius of Earth is how much? 6.3 into 10 raised to 6 meter, and it's square. Okay, so now when you solve it, you will get this value as 9.8. हाँ आज की बात है। आज वाला हाँ तो ये सब जब कैलकुलेट करोगे ना इसको so you'll get nearly 9.9 9.8 ऐसा कुछ आ जाएगा nearly 10 less than 10 आए ठीक है so अब देखो इसमें अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन ठीक है ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन so earth is able to move it now by Newton's third law this object is also pulling earth by the same force 10 न्यूटन अब अर्थ पे हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो अर्थ को खींचने नहीं क्या नहीं so that's why this object is going towards earth
due to its force on Earth, Earth is not moving towards Moon. Is it clear now? Okay? So this is what it is. So हमने दोनों example देख लिए कि where this force of gravitation is significant. It is only significant when the masses of the object are very, very high. ठीक है? So therefore, it will be very significant in case of forces between planets, like in solar system. Why is Earth revolving around Sun? Because of force of gravitation. There is a force of attraction between Earth and Sun, and that gravitational force is acting towards the center. Center पे क्या है? Sun. So that's why Earth is making rotational motion. But why Because Earth is doing circular motion. In circular motion, force acts towards center, but that force is changing the direction of the Earth. So it is undergoing a circular path. Okay? So it is because of gravitational force, Earth is revolving around. Because why circular motion takes place? It takes place due to centripetal force. I have explained you that, right? And the same reason is between Moon and Earth. Moon is revolving around Earth because Earth is pulling Moon towards itself. So Moon is not falling, but it is making circular motion. Okay? So during circular motion, even the force is attracted towards the center, but object makes circular motion. It doesn't fall. Is it clear now? Okay. So any more questions on this? So example 10.1 is this example which I have just done. Is it this one or mass of the, no, this is like this example here. This is example number. So this is the force between Earth and Moon. That is example 10.1. Just go through this example if you have textbook. So here I took an object of 1 kg mass. Instead of that, if you take a moon, let's say this is moon, then the force becomes 6.7 2.01 into 10 raised to 20 Newton. Force is very big there. You have the textbook, then why are you nodding? See that. First example. Take this book. Textbook किसी के पास नहीं. So यार और मैंने बोला होगा कि textbook आएगा बचपन knowledge. ठीक है. Volume law और practice के. Volume is for extra practice. But first time when you are reading, you need to have a textbook. ठीक है. तो textbook में बहुत सारे questions होते हैं which I want you to do in the class. You also don't have textbook. I can play here. Okay. Next. Everybody take a look. You understood? What is there in the textbook? Instead of m equal to 1 kg, we are taking m as moon. So what is the mass of the moon now? What is the mass of the moon? Tell me. 7 point into 10 raised to 22 kgs, right? What is the distance between moon and earth given? 3.84 into 10 to the power 5. into 10 to the power 5. When you do the calculation with this, right? The value of force comes around. What is the value of force? 2.01 into 10 raised to 20 Newton. Is it correct? Okay. So now see what is the force of attraction between Earth and Moon? 10 raised to 20 Newton. Which means how many billion? 10 raised to 19 is 1 billion. So 10 raised to 19, 10 raised to 19. Billion. Okay. And then what? 20 we have to make. So
100 billion. That's what it is. What is the force? 200 billion times. इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है. जबकि अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है? 6 divided by 100 billion, मतलब ऑलमोस्ट 0. और यहाँ पे कितना है? 200 billion times. Over. So that is such a large force at play, and that's why Moon is able to revolve around Earth. Okay? So is the perspective clear? What is gravitational? What is universal law of gravitation, and what is gravitational force? So it is not only between Earth and any object, but it is between any two objects in the universe which has mass. Okay? And that is why it is called universal, because in the universe, these two objects could be in the universe, anyway, universal. And it is only, one more thing to be noticed, it is only force of attraction. It does not repel anybody, like electric and magnetic force. When do electric and magnetic force repel? So when they have the same charge. Very good, yes. Electric force is repulsive when the charges are similar. Positive charge repels positive charge, but a positive charge will attract negative charge. Any example? There is positive charge on proton. There is negative charge on electron. So they will attract. But if you have two electrons, they will both repel each other. Here they will attract each other. Understood? So that's about. And what about magnets? North and south. North and south will attract. So if you have two magnets like this, okay, then they will attract. Okay, or else they will repel. Okay, so all three. So these are fundamental forces in nature. So three I have told you. Only one is left. Nuclear force. That is in the higher standard. Okay, these three forces you can know right away. Okay. All right. So here you have attraction and repulsion both. But in case of gravitation, you have only attraction. This is the major difference. Okay. Let's proceed now. Can I erase it? Any more questions? Sir, why is gravitation called as a weakest force? Yeah, it is the weakest. Like this question, no, we can't say why. It's like we can't answer why we have two eyes, why not three more. This is observation. It is observed that gravitation is the weakest. We experience that, right? But electromagnetic force we experience it is stronger than gravity. It is nature. We cannot answer why we exist. Can we answer that? No. So science is study about what we observe, material, right? And then drawing patterns. So every why cannot be answered at human level. Clear? Yeah. But we can try to understand the process. That is the quest of science. How it is happening, that we can understand. But why? Not every why can be answered. Okay? All right. So it's that, right? If you do that. Force of gravitational force. किसका? उसमें और बहुत सारे concept के लिए जाते हैं. Speed ज्यादा speed That में jet propulsion बहुत सारी techniques हैं. Because space में कैसे घूमेगा? Space में तो अर्थ से बहुत दूर चला गया. ठीक है? अर्थ की जो gravity है, it is effective only till a certain place. बाद में there will be a free zone. इसमें कोई कुछ भी तो कोई किधर भी जाएगा. जिस तरफ जा रहा था बस उधर ही जाते रहेगा. न्यूटन फर्स्ट लॉ. ठीक है? तो आप उसको हम कैसे कंट्रोल करें? उसके अंदर जेट प्रोपल्शन होता है. Do we have this rockets, right? Rocket के बहुत सारे stages हैं. एक बार पेलोड को स्पेस में डाल दिया, सारे रॉकेट्स निकल गए. अब पेलोड कैसे घूम रहा है? So it has solar panels. So it is generating its own energy and it has a mechanism. So Newton's third law at play. तो जितने जोर से उसमें से एग्जॉस्ट बाहर आएगी या जो भी मैकेनिज्म है उसके हिसाब से वो आगे आगे जाते हैं.
ठीक है, so that's engineering. I mean, that's out of scope to discuss in this class. Right now, we're just learning what is gravitation. So when you take up space sciences or you go to ISRO to study astronomy, etc., then you'll be taught about it. Okay? Right now, we are just climbing the first step. Or you're asking a question of top floor. Still a lot of time. Okay. Any questions here? Any question in law of gravitation? No. Let's go ahead. If you know why there is gravitation, then let me know. Okay? Chemical activities under that is responsible for magnetic forces. The question can be anything. ये क्यों होता है, वो क्यों होता है? Answering that becomes difficult part, right? You can just ask anything. You can how to answer that. Why there is a dog? Why there is a horse? हाँ क्या? क्या चीज? ठंडा लग रहा है. अच्छा बंद करना है ऐसी. कौन सा ये वाला? यही है ना? पीछे वाला वो भी बंद करना है. वो बंद है तो चालू करना है. अच्छा ये हो गया मेरी बुक. ठीक है, आई थिंक नाउ यू शुड बी कंफर्टेबल. सबको सारा कुछ क्लियर हो गया इसमें. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फ्री फॉल. अच्छा इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है. क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, importance of universal law of gravitation. There are 4 importance mentioned here. One is we are able to be bound by Earth. ठीक है ना? अगर ये force of gravitation नहीं होता हमारे और Earth के बीच में, तो we could have climbed in the air. ठीक है? हम ऐसा climb कर सकते क्या? नहीं, वापस Earth पे जाते हैं. So we are bound by Earth. That is first. हाँ, तो जो mentioned है वो पढ़ लेंगे. गिरना तो वो तो मैंने बता ही दिया. What is the second importance? It explains the motion between planets. Okay? Like motion of planets around sun. That's one. Motion of moon around Earth. That is another. So that's the third importance. And the last one is formation of tides. Okay? Formation of high and low tides by sun and moon. दोनों से टाइड बनता है. क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है. ठीक है ना? क्योंकि डिस्टेंस अगर दूर हो गया तो फोर्स बिकम्स लेस बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स स्क्वायर से ज्यादा कम होगा. डिपेंड्स ऑन 1 बाय फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय d स्क्वायर. तो d जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा कम होगा. और कैसे? नॉट सिंगल बॉन्ड, स्क्वायर. इसका मतलब समझ में आया? एक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऊपर से उसका स्क्वायर 2 टाइम्स नहीं, d टाइम्स. जितना है उतना ही. समझा कि नहीं? देखो क्या होता है, अगर हम डिस्टेंस को 3 स्क्वायर लेते हैं और उसके बाद हमने 4 स्क्वायर लिया, तो ये होता है 1/9 और ये कितना हो गया 1/16. तो दिस इज नॉट लीनियर. डिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज बहुत ज्यादा अमाउंट से फोर्स को कम कर देगा. दैट्स व्हाट इट मींस. लीनियर होता तो f is inversely proportional to 3 and then f is inversely proportional to 4. 4 तो 3 का डबल भी नहीं है. ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा फर्क हो गया. परसेंटेज में देखो कितना परसेंटेज 16/9 का निकालो. नाइन प्लस 9 कितना होता है 18. तो ऑलमोस्ट 100%. ठीक है? तो 100 तो नहीं, 100 से थोड़ा सा कम, ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज हो गया. समझ गए? यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 25%. ठीक है? तो ऐसे करके कंपेयर कर सकते.
25% से भी थोड़ा कम ही हो। परसेंट सिखाया कि नहीं तुम लोगों को भी? परसेंटेज निकालो। सिखाया ना? 7 बचपन में सिखा दिया। चलो तुम लोग एक्सपर्ट हो परसेंट। सर एक डाउट है सर, जैसे कोई भारी रस्सी जैसे टग ऑफ वॉर वाली जो तो मोटी होती है, उसको एक रॉड से बांध दिया, हम रॉड के पास जाके रस्सी को खींच रहे हैं तो बीच का फोर्स ज्यादा है, पर थोड़ा दूर जाए और खींचे तो फिर बीच में रस्सी थोड़ी नीचे लटक गई, ऐसा क्यों? रस्सी का वेट भी तो है। तो फिर हम तो उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तुम फोर्स अभी नहीं उतना कैसे फोर्स लगा? ये रॉड है, अब तुम रस्सी ऐसे खींच रहे हो, ठीक है? यहाँ पे अगर तुमने रस्सी पकड़ा है, ये रस्सी लटक रही है, उसको ग्राउंड ने, उसको रस्सी को कौन उठा रहा है? ग्राउंड। तुम कितनी रस्सी को उठा रहे हो? सिर्फ इतनी सी पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक लटकी हुई, तो तुमने रस्सी को यहीं तक एफर्ट लगाया ना, बाकी रस्सी को थोड़ी पकड़ा। लेकिन अब जब यहाँ आ गया तो तुमने पूरी रस्सी का भी वेट लिया हुआ है, तो वहां पे भी तुम्हारी एनर्जी स्पेंड हो रही है, ठीक है? अब ये तुम पूछना क्या जा रहे हो मुझे नहीं मालूम ना। you're actually lifting the rope, तो वो एक एक्स्ट्रा काम तो हो ही गया, उसके अलावा जो तुम करना चाह रहे हो, ठीक है? तो एनीवे इसका ग्रेविटेशन से क्या लेना देना है अभी? सर रस्सी नीचे क्यों जा रही है? अच्छा, बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड वेट अभी हम पढ़ेंगे वो आगे, ठीक है? नेक्स्ट इज फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? Sir, horizontal drop. So any object when it is falling only under Earth's gravity, ठीक है? फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या है? Any object which falls only under the influence of Earth's gravity is said to be in free fall, ठीक है? So free fall में basically तुम्हें क्या देखना है? So there are a couple of points. Let us say this object is falling under Earth's gravity. तो Earth's gravity की तरफ फॉल होगा, let's say its mass was m, ठीक है? So the acceleration due to gravity of any object falling towards Earth is given by g. ये हमने पढ़ा है, मोशन चैप्टर में पढ़ा है ये, ठीक है? तो अभी इस पे फोर्स कितना लग रहा है? By Newton's second law, if any object is moving with acceleration g, and if its mass is m, by Newton's second law, what is the force on the object? mg. ठीक है? This force is given by Newton's second law. But by universal law of gravitation, the force on the same object can be given as divided by radius of Earth square. Isn't it? Let us say this is very close to the surface of Earth, 1 meter. So 1 meter is a negligible distance as compared to radius of Earth. So we are just ignoring 1 meter. So we are taking the distance between this object and Earth as radius of Earth. Okay? So almost it will be this. Because what is the radius of Earth? 6400 kilometers, 6400 kilometers. कहाँ 6400 kilometers और कहाँ 1 meter? So you can ignore that. ठीक है? So these forces can be equated then, these two forces, right? So when you equate these two forces, you get mg is equal to gme divided by re square. ठीक है? So this m gets cancelled. So this gives us the relation between small g and capital G. This is how we got the value of G as 9.8. Now you substitute all these values. This data is available. So when you substitute these constants, so we will get 9.8. But now this is acceleration. So it will be meter per second square. So far we have been telling you that use the value of G as 9.8 meter per second square. It comes from here. ठीक है? So this value of G is for Earth. This value of G is for Earth. So maybe we would like to mention it as GE, G on Earth.
So likewise, moon will have its gravity as g, mass of moon divided by radius of moon. Okay, so when you substitute for moon, let's say the same mass was falling on moon, then what you will get? You'll get F on this object by moon will be mass into acceleration due to gravity on moon. And similarly, by Newton's law of gravitation, it will be g mass of moon into mass of the object, falling object divided by radius of moon square. ये हो जाएगा on the moon. So when you equate these two forces, what you will get? So therefore, mg moon must be equal to g m and this mass of the object on the moon divided by radius of moon. Discuss square. Again, the mass is getting cancelled, so you'll get gravity value at moon is equal to gmm divided by radius of moon square. This is what you'll get. Okay. Now, when you substitute all these constants, g is known, mass of the moon is known, radius of the moon is known. It is given in this textbook. I don't know whether you read your textbook or no, but you should. All this data is given in the moon. This will not be given in your volume. Okay? So this table is given. So radius of moon and mass of moon is given. When you substitute it over here, so you get this value as equal to 9.8 divided by 6. This is what you get. How much you get? 9.8 by 6. So when you compare M and G, okay? So therefore Gm is equal to GE, 1/6 of GE. Got it? So Earth's gravity is 6 times more than Moon's gravity. So any object, same object, mass is a constant for a given object. Anywhere in the universe, mass does not change. So if you take the same object on moon, it will weigh 1/6 of what it was weighing on Earth. So if any object was weighing 60 Newton on Earth, it will weigh 10 Newton on moon. Okay? I'm saying weight. Weight is always force, Newton. So if object's weight on Earth is 60 Newton, its weight on moon will be how much? How much it will be? 10. 1/6. 60 by 6 is 10. Is the discussion clear? Okay, how we got all this? So this is very important. This topic is called as relation between V and G. Okay, this is one. Second is, you may be asked a question, derive the expression for acceleration due to gravity on Earth. Then also you'll follow these steps. Clear? All right. So now let's build a free fall further. Now we'll write equations of motion during free fall. So any questions still here? Any questions still here? Is everybody clear? Because I'm still getting the rating. There are 2 students who are not liking my teaching. सब में 0 दे दिया मेरे को. अभी मैं भी उनको सब में 0 दे दूं. ये है क्या ये? पता नहीं चलता कौन है. हाँ? पता नहीं चलता. वो जानबूझ के हमने ऐसा रखा है because we don't want to put students under pressure. तो anonymous है. So you can give feedback without naming. तो किसी को पता नहीं किसने किया है, लेकिन हमें पता है. नहीं पता है. Okay. So equations of motion during free fall.
तुम ध्यान से सुनोगे और जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ोगे, जैसे टेक्स्ट बुक से शॉर्टकट मत लो, वॉल्यूम शॉर्टकट है, वॉल्यूम कब के लिए हेल्पफुल है, एंड में, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक से पढ़ो, ठीक है, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम से पहले रिवाइज कर रहे हो तो वॉल्यूम, ठीक है, बट फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो। टेक्स्ट बुक थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बिकॉज वो इंग्लिश थोड़ी अजीब टाइप की दी है और बहुत सारी चीजें सिंपल तरीके से नहीं पता है, बहुत कहानी घुमा के लेके आता है। तो एनसीईआरटी का थोड़ा है, क्योंकि वो साइंटिस्ट, ऐसा लगता है जैसे साइंटिस्ट लोगों के लिए लिखी हुई, हाँ वो थोड़ा सा वो है, तो मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, बट स्टिल यू ट्राई, बट दैट विल रेज योर लेवल। अगर तो बुक से पढ़ने का एक बार हैबिट तुमको हो गया तो देन यू डोंट नीड एनीबॉडी एक्चुअली। Textbooks are very nicely written, and there are in the new textbook, but there could be some confusion because उन लोग ने क्या किया है, ऐसे ही कट कर दिया सिलेबस और फ्लो को मेंटेन नहीं किया, तो कहीं कहीं पे पुराना चीज आ गया अचानक से, जो पढ़ाया नहीं वो भी कुछ ऐसा भी हो, तो पुराना वाला बुक जो है ना दैट इज मोर कंप्लीट, जस्ट इन केस अगर ब्रदर या सिस्टर का है तो रखो। बाकी वॉल्यूम तो पूरा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, तो इट हैज द न्यू सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा, तो वॉल्यूम में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इसके लिए न्यू टेक्स्ट बुक फॉलो करो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, समझ आ गई बात, तो पैरेलली रखो टेक्स्ट बुक और, हाँ सुन रहे हो, ठीक है। What I was going to tell you, equations of motion during free fall, बहुत सिंपल है, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है पहले जो हमने पढ़े, तो उसमें A को हम क्या कर देंगे G, और S को क्या कर देंगे H। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था अभी क्या हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक्सीलरेशन जो था हमारा अब क्या बन गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT जो था वो क्या हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू U प्लस GT, ये ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे क्या था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या था लास्ट वाला V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये क्या बन जाएगा, ये क्या है V स्क्वायर इज इक्वल टू U square plus 2GH, ओके। यहाँ पे क्या साइन कन्वेंशन था, A कभी पॉजिटिव था, कब था, when velocity increases, जब V इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे V क्या होता है डिक्रीज, मतलब ये क्या था रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन में नेगेटिव लेते हैं इसका, है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब लेते हैं, when the body's velocity increases, ये क्या होता है ब्रेक जब मारते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा G कब पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी, when body is falling downward, है ना, ऊपर क्या था जीरो वेलोसिटी, जब ग्राउंड को हिट किया तब मैक्सिमम वेलोसिटी, तो G is positive for downward motion। हमेशा याद रखना G नेगेटिव कब लेंगे अपवर्ड मोशन, ये देखो यहां से जोर से फेंका एकदम टॉप पे जब भी पहुंचा जीरो और उसके बाद नीचे आ गया, स्टार्ट किया तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहे हो, ओ ठीक है। देखो जब स्टार्ट किया तो मैक्सिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, लेकिन जब टॉप पे गया, जब उसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की तब जीरो हुआ ना, तो क्यों जीरो हुआ, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लग रही है। हाँ तो हमने सिर्फ अपवर्ड मोशन में बोला है, अपवर्ड मोशन, नेगेटिव कब है ओनली ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, वर्ड नहीं यार, अपवर्ड मोशन, समझ आ गया, ओनली ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन,
अब अपवर्ड जाके फिर से नीचे आएगा, तब तुम्हें बता सकते हो। समझो आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्टेड बाय, अरे अब क्या यार, नहीं दोनों करना होगा, हाँ ठीक है। तो समझो ये प्रोजेक्टेड बाय 50 मीटर पर सेकेंड लेट अस से, तो ये 50 मीटर से मैंने प्रोजेक्ट किया। अब जब वो नीचे आया तब कितने मीटर पर सेकेंड से, वही जगह पे 50 से ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, चाहे ऊपर जाने में या नीचे जाने में। ऊपर जाते टाइम जितना अपोज कर रहा है, नीचे आने में उतना ही एक्सेलरेट कर रहा है। जितना रिटार्ड कर रहा है ऊपर, उतना ही एक्सेलरेट कर रहा है नीचे। तो जो स्पीड से ऊपर फेंका, वही स्पीड से जब वो हिट करेगा सेम स्पीड से, याद रखना। और एक चीज क्या है, जितना टाइम उसको टॉप पे पहुंचने में लगा नीचे से, उतना ही टाइम में वो वापस आएगा। समझो यहां से जाने में 5 सेकंड लगा, वापस 5 सेकंड ही लगेगा उसको नीचे। समझ आ गई बात? तो ये फंडा है, ये सब याद रखो, न्यूमेरिकल में काम है। ठीक है, चलो तो क्या है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, ये नहीं है, ये किसके लिए? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन अ प्लेन और हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, ये किसके लिए? वर्टिकल मोशन। ठीक है, वर्टिकल मोशन भी दो टाइप का है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो न्यूमेरिकल में क्या पूछा है उस हिसाब से करना है। ठीक है, ओके 15 मिनट्स और हैं। अभी हमारा क्या टॉपिक बच गया है? मास एंड वेट। ठीक है, हाँ प्रेशर तो कराया बोल रहा है ना, थ्रस्ट तक हुआ है, प्रेशर नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो पहले मास और वेट बता देता हूँ, क्योंकि वो तो बचा है ना अभी। मास एंड वेट हो गया क्या? मास एंड वेट नहीं हुआ ना, तो वो कर लेते हैं। तो उस वो होने से तुम्हारा ग्रेविटेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर प्रेशर नया पार्ट। ठीक है, चलो ये समझ आ गया? लिखना है किसी को? ठीक है, क्लियर। Okay, next is, let's understand what is mass and what is weight. तो मास और वेट सेम तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले भी पूछा था कि जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या मेजर करते हो, अपना मास या वेट? मास मेजर करते हैं। वेट गलत है। हाँ, लेकिन बोलते हमेशा क्या है, तुम्हारा वेट क्या है बेटा? 50 केजी, 50 न्यूटन बोलते, क्या बोलते हैं? 50 केजी। तो केजी बोल रहे हो तो वेट कैसे हुआ? वेट को डॉक्टर को सब आती है बेटा, उसको मालूम है जो पेशेंट आया उसको कुछ भी बोलेंगे चलेगा। कभी तुमने क्वेश्चन किया क्या डॉक्टर को? नहीं ना सर, पता बाद में चला। अब करेंगे सर अब। मत करना, मत कर, दवाई लोचा नहीं करने का। कहाँ पे क्या, अगर कभी कोई गलती कर रहा है डॉक्टर वगैरह, तो तुम्हें देख के बात करनी चाहिए, दोबारा जाना है कि नहीं उसके पास, है ना। प्ले स्मार्ट, ठीक है, ओके। सरकारी डॉक्टर है तो बोल दो, प्राइवेट वाले से पंगा लो। ओके, मास क्या होता है? सुनो, मास इज बॉडी में मेजर ऑफ द बॉडी कंटेंट, मैटर कंटेंट, ठीक है, जिसे वो ऑब्जेक्ट बना है। इट इज measure of matter content of the substance। और तुमने क्या पढ़ा है? इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसका जितना, और इट इज अ मेजर ऑफ
इनर्शिया। ठीक है, अब जैसे एक मेटल ब्लॉक है 1 kg, वेट्स देखे होंगे 1 kg 2 kg, दोनों सेम सब्सटेंस है, दोनों आयरन का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन एक हैवी है और एक लाइट है। क्या फर्क है? 2 kg में आयरन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, the matter content of iron is more in 2 kg वाला substance, ठीक है, so it's a measure of matter content. What about this? ये force है, ठीक है, it is a force of attraction by earth on the object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वेट क्या कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे? सो फोर्स क्या हो गया? मास, और अर्थ कितनी एक्सीलरेशन लगाती है? जी, सो वेट हमेशा क्या होता है? mg, और मास कितना होता है? जस्ट m, ये फर्क है। वेट नहीं समझा? क्या होता है वेट? फोर्स है ना ये, फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? F इज इक्वल टू ma, ये था कि नहीं था? तो ये क्या है? एक्सीलरेशन। m क्या है? मास। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की तरफ छोड़ते हैं तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है? g, यस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये भी तो एक्सीलरेशन ही है ना। तो अब किसी ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, लेकिन अर्थ तो इसको खींच रही है ना जी से, छोड़ेंगे तो जाएगा, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये यही थोड़ी ना रह जाएगा, मैंने इसको छोड़ दिया, यही तो नहीं रह जाएगा, छोड़ेंगे तो कहाँ जा रहा है? कितना एक्सीलरेशन से जा रहा है? जी, तो इस पे फोर्स कितना हो गया? इसका मास इनटू जी, ये किसने बताया? न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, तो वही वेट होता है। हम अर्थ पे खड़े हैं क्योंकि ये सरफेस है अर्थ की, आगे कुआं है, मैं जा रहा हूं ऐसे तुमसे बात करते हुए, क्या होगा मेरे साथ? नीचे गिरूंगा मैं, क्योंकि मेरे पे फोर्स तो हर जगह लग रहा है, सरफेस में भी लग रहा है, लेकिन सरफेस मेरे पे क्या लगा रही है? रिएक्शन। जितना फोर्स मेरा अर्थ के सरफेस में लग रहा है, सेम रिएक्शन अर्थ का सरफेस मेरे पे लगा रहा है, इसलिए मेरे पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। मेरा वेट माइनस रिएक्शन ऑफ द अर्थ इज जीरो, इसलिए मैं अंदर नहीं घुस रहा हूं। यही अगर मैं सैंड पे चलता तो क्या होता? पैर अंदर घुसते थोड़े बहुत, जब तक सैंड का हार्ड लेयर नहीं मिलता, ठीक है, तो ये चीज समझो तुम लोग, ठीक है, क्लियर हो गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? तो अब बताओ, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट केजी, इसका यूनिट न्यूटन, ठीक है, केजी, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, इन द ऑनर ऑफ न्यूटन। बेसिकली न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या? किसको एक न्यूटन बोलेंगे? 1 न्यूटन क्या होता है? देखो समझ लो इसको, 1 kg ऑब्जेक्ट को अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है, हमने 1 kg का मास उठा के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फेंक दिया, तब हमने उस पर कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन, ये इसका मतलब हो, ठीक है, दैट्स इट। अभी और थोड़े कुछ और डिफरेंस होंगे, बट ये मेजर डिफरेंस है, ये तुम्हें समझ आ गया मास और वेट का डिफरेंस? हाँ, this can be, yeah, mass is always constant everywhere, ये भी लिख लो, एक important है, mass always remains constant, ठीक है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, लेकिन इसका वेट कांस्टेंट नहीं होगा,
Weight varies from place to place. क्यों? ग्रेविटेशन क्योंकि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अलग अलग रीजन में अलग होती है। इक्वेटर के पास जाएंगे तो ज्यादा होगा। कम होगी, उल्टा बोलता है। इक्वेटर पे कम होगी, पोल पे ज्यादा होगा। देखो क्यों होता है? अर्थ कैसा होता है? परफेक्ट स्फीयर होता है। अर्थ कैसा होता है? परफेक्ट स्फीयर। लेकिन जब वो घूमता है तब वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता। जब वो ऐसे रोटेट होता है तो यहाँ पे उसकी ये ऐसा ओवल शेप हो जाता है, बल्ज आउट हो जाता है इक्वेटर के रीजन। तो इक्वेटर का जो डिस्टेंस है और पोल का डिस्टेंस है, देखो कौन सा डिस्टेंस कम है? पोल। तो फोर्स का क्या वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ? 1/d²। तो जहां पे डिस्टेंस कम होगी वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जी क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो आर ई यहाँ पे कम है, यहाँ पे आर ई डैश है और यहाँ पे आर ई है। समझो कौन सा छोटा है? पोल वाला छोटा है। इसके लिए वहां पे क्या होगा? जी की वैल्यू बड़ी बड़ी होगी बाबा। आर कम है ना तो जी बड़ा होएगा। ठीक है, जी बड़ा होगा तो वेट बड़ा होगा। इनवर्स रिलेशन है बेटा, सिर्फ वाई वाली बात नहीं है। यहाँ पे हाउ है। समझने की बात है। कोई भी जब क्वांटिटी डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो तुमको आंसर कितना मिलेगा? कम मिलेगा। डिनोमिनेटर में कम है तो आंसर कितना मिलेगा? बढ़ जाएगा ना। जैसे फ्रैक्शन। ठीक है। सो with this we have covered mass and weight also. Conceptually is the concept clear now? थोड़ा तुमको टाइम लगेगा प्रैक्टिस करके, जब तक 2-4 न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे नहीं बैठेगा दिमाग में। बट आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। ठीक है, ओके। सो क्विकली मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। ये सब वॉल्यूम में दिया है तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट। तो आज अब ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया। कुछ लोगों ने 2 बार किया है, शुरू से भी कुछ लोग बैठे हैं ना। तुम शुरू से अटेंड करो और तुमने भी अटेंड किया। अच्छा, नेक्स्ट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट एक फोर्स है। कैसा फोर्स? नॉर्मल। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल फोर्स इज वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, समझो ये प्लेन सरफेस है, तो इसका वेट कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स थ्रस्ट ऑन द सरफेस। ठीक है, सो इट इज अ नॉर्मल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट, ये देखो बॉटल रखा है, कैसे वेट लग रहा है इसका? हाँ, या बट यू आर नॉट रिजिड बॉडी। अब तुम लेट गए ऐसे, सीधे खड़े हो तो तुम थ्रस्ट लगा रहे हो। थ्रस्ट कहां पे लग रहा है? बाय योर फीट। योर फीट इज एक्सर्टिंग थ्रस्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो दिस डस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रस्ट। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रस्ट ऑफ दिस डस्टर? इट्स वेट, बिकॉज वेट फोर्स है। हमको क्या चाहिए? थ्रस्ट नॉर्मल फोर्स। वेयर? ऑन द सरफेस। ठीक है, तो प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट को भी हम सिंबल क्या लेते हैं? थ्रस्ट का एफ ही लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? एक फोर्स है। सिंबल फॉर थ्रस्ट इज एफ। अभी तुम ये मत सोच लेना ABCD करके एफ, फिफ्थ पॉइंट नहीं है वो, एफ ही है। ठीक है, थ्रस्ट का सिंबल क्या है? एफ। सो व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है? थ्रस्ट अपॉन
thrust per unit area, ठीक है। Why we are saying thrust per unit area? देखो इसका मतलब ये हुआ, समझो तुम्हारे पास कोई एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है, और इस पे थ्रस्ट कैसे लग रहा है, तुमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया पूरा, इस पूरे एरिया पे जो थ्रस्ट लग रहा है उसको तुमने थ्रस्ट बोल दिया, क्या है ये F, और ये फुल एरिया पे लग रहा है, इतने एरिया पे, तो ए एरिया पे थ्रस्ट है F, तो यूनिट एरिया पे कितना हो गया F बाय ए, समझ आया, यूनिट पे ए पे F लग रहा है थ्रस्ट, तो यूनिट एरिया पे कितना हुआ F बाय ए, यूनिटरी मेथड, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर, thrust exerted per unit area, clear, thrust per unit area. So what is the unit now? Thrust इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, सिंबॉलिकली pressure is equal to F by A, ठीक है। So what is the unit of pressure? Unit of force, unit of area, so this is Newton per meter square, we call this as Pascal. So unit of pressure is Pascal, ठीक है। So what is 1 Pascal then? What is 1 Pascal? 1 Newton per square, यानी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बाय 1 मीटर एरिया पे 1 न्यूटन का थ्रस्ट है, पूरे एरिया पे कितना है 1 न्यूटन, देन वी से द प्रेशर इज 1 पास्कल, क्लियर, वाह क्या टाइमिंग है। So have we covered all the missed topics? What's your name? Sairaj, right? Sairaj or Saidip, क्या नाम है, राजदीप, ओ हाँ कोई है साइराज, so राजदीप, have we covered all the missed topics? Yes, sir. हाँ अच्छा, उसके बाद प्रेशर का हमने सब कुछ कवर किया है क्या, जो लिक्विड के लेवल पे जैसे जैसे डीप जाते हैं प्रेशर बढ़ता है वो कवर किया है, ठीक है। और कोई टॉपिक अगर रह गया है ये सारा कुछ पढ़ने के बाद तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ, we'll do that or else we'll start with numericals। बाकी हमारा थ्योरी चैप्टर का पूरा खत्म है ना, और किसी का कोई थ्योरी बाकी है इसमें नहीं ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में we'll do it। Thank you बेटा, I'll just keep this mic here, be careful। हाँ,